So today we are going to cover the tooltip, and basic thing. Let's build the dashboard first, then we'll go for the live session. एक मिनट बस, let me send it to someone. एक लड़के शी टोल्ड मी कि सर मुझे जब भी पढ़ाएं तो मुझे लिंक दे देना। मैंने कहा ठीक है, perfect. So we are going to build the dashboard. So let's just start build quickly. So select this one, change to middle, increase the font up to 28, bold that. Then I don't want to see color should be changed to white. Then whenever you wanted to see this, we can say pan. So go to that bookmark selection, everything. Okay, so go to the format, then select this one, then style, hide with adjust as per your need. Then padding is not go, background color should be this, transparency if you want to do that, otherwise I think this looks good, no problem. Visual border, change different color. I'm looking for the corner, shadow should be inside so that look like a 3D, color should be dark red, perfect. Title not needed, and let's change the little bit smaller size, perfect. VIKSH, because is this wrong or spelling is right? No sir, remove H. Right. Sasha has a problem. Perfect. Next, we are going to add the, yes, I'm going to add the table. Perfect. See, what is the drill down and drill through? So drill up, drill down मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें देखो इस वे पे होती है, ठीक है, ऐसे बटन हमने ड्रिल कर, इसको हम इन टेक्निकल टर्म्स में ओवरलैपिंग बोलते हैं, एक तरह से जैसे हाइड करना, ठीक है। हाँ, ये जो चीज़ें आती है ये आती है, ये रोज में आता है, ठीक है, और ये इसका कॉलम होता है, याद रखना। सो ये कॉलम लेवल पे इंफॉर्मेशन है, तो हम कॉलम लेवल पे जाएंगे, कॉलम हेडर, ठीक है। जो भी हेडर में चेंजेस करने हो, मुझे इसका टेक्स्ट कलर वाइट करना है, बैकग्राउंड कलर सेम दैट एबव हैज, ओके, बोल्ड कर लो, जो भी करना है कर लो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट ये रोज में आता है, रोज हेडर्स बोलते हैं इसको। सो रोड हेडर्स में मुझे इंक्रीज करना है फॉन्ट, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे, टैक्स कलर चेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट हो गया इसका बैंडेड रो, यानी रो जो बैंडेड ऐसे दिखेगी उसको चेंज कर सकते हो या रख सकते हो, सही लग रहा है तो रहने देता हूँ मैं। रैप टेस्ट कर सकते हो, यानी टेस्ट रैप मतलब होता है कि जैसे लाइन है तो रैप हो जाएगा। तो अच्छा, अब वो जो ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन का जो बटन है, ठीक है, इसको भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि यू शुड कीप इट। देखो तो यहाँ स्टेप लेआउट, सॉरी पहले इनेबल करो इसको, यहाँ से, ठीक है। सो इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ड्रिल अप ड्रिल थ्रू फिर भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट क्लिक करो आप, एक्सपेंड ऑल लेवल,
ओके। डिपेंड भी करेगा, डजंट मीन कि ये फॉलो नहीं करता, इट विल फॉलो यू, स्टिल यू कैन फॉलो, बट अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक ही कॉलम में सारी चीज़ें आनी, विच आई डोंट वांट, आई वांट टू सी इन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। सो टू दिस, let's close this and see what happened. It is coming on the different columns. So step layout must be off, then it will move to the separate column. So how does it look like? So suppose you have a manager, okay, so we have a director, then we have a CEO, then we have we can say manager, then we have a AVP, then we have the we can say team leader, then we have employees. So we can create this way in matrix. This is called matrix. Matrix very important in visual, okay, and very toughest visual in Power BI and Tableau also. Everywhere is the toughest too. Next, just turn on the step layout to close view. Next आते हैं column subtotal पे. I don't want to see subtotal. मुझे नहीं दिखाना subtotal. So let's cancel this one. I don't want to see row total as well. See this row total is left now. If you wanted to see, enable this one. ओके। हाँ, ग्रैंड टोटल रहे, अप्लाई ऑल लेवल। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब तक आप ये टोटल, अगर आप कॉलम टोटल रो टोटल नहीं करो तो दिखेगा ही नहीं टोटल, आपको कहीं नहीं दिखेगा टोटल। सो इसमें समझना है कॉलम सब टोटल और टोटल डिफरेंस क्या है, यानी इफ यू आर लुकिंग फॉर द टोटल कॉलम लेवल, ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे टोटल दिखेगा आपको एंड देन यू विल सी दिस वे। सो लेट्स इनेबल दिस वन। ओके। टोटल, हाँ, अगर आपको नेम चेंज करना है तो टोटल का नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन वैल्यू को कुछ फॉर्मेटिंग करना कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। रो टोटल में ये देखो, क्या होगा, माउस नहीं चल रहा क्या, अरे क्या है इसको, लेट्स क्लोज दिस वन, ठीक है। सो देखो टोटल दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल दिख सकता है, रो लेवल टोटल हो गया। अब नेक्स्ट हो गया मेरे पास, कभी कभी कैटेगरी बेस पे भी टोटल करना होता है, तो ये देखो यहाँ पे हम रो ग्रैंड टोटल हो गया, तो ये सब फॉर्मेटिंग के लिए है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम का टोटल सब टोटल दिखाना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, बट मेक श्योर यहाँ पे क्या ना जो टोटल्स होंगे वो वैल्यूज़ के होंगे, ऐसा नहीं कि टैक्स जैसे डायमेंशंस के नहीं होंगे, केवल जो होंगे फैक्ट्स के होंगे। जो कॉलम जैसे सेल्स हो गया, कॉग्नो डिस्काउंट, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, मंथ नंबर, प्रॉफिट, सेल्स प्राइस यूनिट एंड सम ऑफ ईयर। सम ऑफ ईयर ऑब्वियसली इज नॉट नीडेड। सो इसमें कैटेगरी अप्लाई टू हेडर, और हेडर में अप्लाई कर सकते हो आप, यानी चाहते हो कि ऊपर दिखे तो कर सकते हो। अप्लाई टू सब टोटल, अप्लाई टू टोटल। सो दीज आर कैटेगरी वी हैव, यू कैन चूज एज पर बिजनेस नीड, ओके, एंड दैट्स इट। सो इसको सी इन वन डे नॉट पॉसिबल, ओके, सो you do practice it, okay, let me know if you get difficulty. And also you can give the header if title, if you want to looking for the sub kind of title. So sales, if you want to bold it, change the color, Arial black, or maybe change the text color should be white, background color should be different, जो भी हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिपोर्ट। मैट्रिक्स में कोई लिमिट, बहुत सारे तरीके से रिपोर्ट बनती है, डू प्रैक्टिस, ओके, बस आई गिवन द आइडिया दैट व्हाट इज इट, आई हैवंट कवर्ड एनीथिंग विद देयर इज नो लिमिट ऑफ द सिनेरियो। इवन ये जो दिख रहा हो आप, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, हेडर्स को भी, तो बताया था, उनको देखिए कहाँ स्टाइल, हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो इस रिपोर्ट का पूरा स्टेटस ही बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अपना ही करो, नहीं आता तो इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग ग्रिड लाइन दे सकते हो, यहाँ से वर्टिकल लाइन दे सकते हो,
सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। देन आप Okay. हाँ बॉर्डर कैसा चाहिए, कॉलम हेडर टॉप बॉटम वट एवर यू नीड, यू कैन गो हेड एंड ट्राई इट ईच वैल्यू, इवन चेंज द वैल्यू लेवल टू, ये देखो कलर चेंज कर सकते हो आप। देन स्विच वैल्यू टू रो, यानी ये जो वैल्यूज हैं यू कैन स्विच एज वेल, से दिस ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी ऑटोमेटिक, ये हम स्विच कर सकते हैं इन मैट्रिक्स रिपोर्ट। So there are many aspects it going to cover, so you should learn slowly and try to pull this one. See सारा आ गया एक रो में, जबकि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने तो बस इसको क्या नाम है, बस चेंजेस किए थे थोड़ा सा, ऑलरेडी इट इज़ इन रो। जैसे कोई एक कैटेगरी है तो हम उससे कॉलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। Okay. नेक्स्ट कम टू द हियर आइकन, यहाँ पे सारे विजुअल इन्फॉर्मेशन, अगर विजुअल की इन्फॉर्मेशन चाहते हो देन डू इट। विजुअल वार्निंग, कभी कभी रिपोर्ट हम जब बनाते हैं तो कुछ डेटा में प्रॉब्लम होती है, चाहे हो सकता है कि डेटा फिट न बैठ रहा हो तो एरर्स आते हैं, तो वी विल सी द वार्निंग। नेक्स्ट विजुअल ड्रिल अप ड्रिल डाउन पॉसिबल है कि नहीं, चाहिए जो ऑप्शन ये ड्रिल ये ड्रिल अप है, ये ड्रिल डाउन है, ठीक है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था ना यहाँ पे। Mm-hmm. हाँ कोलाप्स ऑल स्विच, Enter. Oh. हाँ सो हम इसको भी कर सकते हैं, ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रिल अप भी कर सकते हैं, चाहे ऑल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ऑल हालांकि कैन बी Mm-hmm. डिपेंडेड ईच लेवल इट गोइंग टू मूव। हेल्प टू नरेटिव, सो ये ऑप्शन बंद कर सकते, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इट वोंट बी डिस्प्ले एंड देयर इज नो गोइंग टू फंक्शन इन इट, सब बंद हो जाएगा, सब बंद कर सकते हैं। इसलिए होता है ताकि if in case some people don't want to see this kind of option, they don't want to share, like people wanted to control in the Power BI, so in those scenario you can do that। वो चाहते नहीं कि सामने वाला कोई काम कर पाए। आप यूएसएस की रिपोर्ट आएंगी ना तो उसमें देखोगे कि चीज़ें अप्लाई होंगी, आपको कुछ भी काम ही नहीं करेगा, बट यहाँ पे तरह की डेटा है तो रखना पड़ेगा हमें, इसलिए इनेबल है, अदरवाइज ये सारे ऑप्शन हाइड हो सकते हैं, ठीक है। So, जैसे ये ऑप्शंस हैं, ये बने हुए हैं साइड में आइकन्स जो बने हुए हैं, ये हाँ पावर बीआई डेस्कटॉप पे तो दिख रहे हैं। हाँ जब हम इसको पावर सर्विस में जब लोड करेंगे तो क्या ये जो आइकन्स हैं वही से ऐसे ही दिखेंगे, ये भी आइकन्स वहां पे भी हाँ हाँ उस चलेगा, रिपोर्ट? हाँ हाँ बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक आप मैंने ऑफ कर दिया दिखेगा नहीं, पावर में यहाँ पे, यहाँ ऑफ कर दिया दिखेगा नहीं, सारा ऑन करना पड़ेगा आपको। अगर कभी कुछ ऐसा सिनेरियो आता है तो यू कैन टर्न ऑफ फ्रॉम हियर, सारे आइकन बंद हो जाएंगे। मुझे जरूरत है इसीलिए आप जस्ट टर्निंग ऑन, हेल्प टू नेट विच इज नॉट परफेक्ट। टूल टिप के लिए तो चलो टूल टिप आएगा तो कवर करेंगे, ठीक। ये तो हो गया मैट्रिक्स का। लेट्स कवर दी डुप्लीकेट दिस पेज टेबल। विजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, अगर विजुअल वे टर्न करने नहीं आएगा देन यू विल गेट अ प्रॉब्लम। सो लेट्स कन्वर्ट टू द टेबल। टेबल में सिंपल है, वट एवर कॉलम यू हैव यू कैन जस्ट चेंज इट आउट, नथिंग एल्स। उसमें पॉपुलेट करते जाओ, कॉलम दिखता रहेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। स्टाइलिश शैडो बॉर्डर सबटाइटल, नहीं मुझे डिफ़ॉल्ट चाहिए, सो लेट्स चेंज द डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ताकि व्यू बेटर हो। सी यहाँ पे बस सिंपल जैसे कि कॉलम ऐड करते चले जाओ, यहाँ से यहाँ पे आओ, जो भी कॉलम है एक ही है, आप यहाँ पे आके ऐड करते चले जाओ। हाँ नथिंग एल्स डू दैट, ठीक है, सेम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया टेबल का। नेक्स्ट आते हैं चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं तब उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट दिस वन, लेट टर्न दिस वन टू सेम विजुअल, टर्न टू द डिफरेंट विजुअल, सो गोइंग टू टर्न इनटू द small end. See what happened that we have a multiple criteria and multiple, you can say, location. Like suppose we have 5-6 location in my report, okay, and I want to see the product level information by each country, मैंने प्रोडक्ट बेसिस में देखना चाहता हूँ इस कंट्री को, एग्जांपल के लिए मैं इसको सही कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मुझे मंथ नहीं चाहिए, कंट्री भी नहीं चाहिए, यहाँ पे करते हैं सीरीज, ठीक है, स्मॉल एंड पे
सेगमेंट हो गया, सेगमेंट करेक्ट है, टोटल सेल्स भी करेक्ट है, रीजन में डेट नहीं चाहिए, डिस्काउंट बैंड नहीं चाहिए। मुझे स्मॉल एंड मल्टीपल में आते हैं, यहाँ पे हम लेंगे कंट्री। अभी देखो क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, it is going to divide by each country and against the each segment as well. Even you can select the product as well if you need it. See, you one visual divide multiple visual, which is called small end. So small हाँ, multiples. small multiples. Yeah, small end say mean previously say small end, but now we are changing to small multiples. You can say that whatever it is. So this way you can populate it. ठीक है? Same formatting concept is same, nothing is different. Okay. Next. Without कुछ पूछना तो नहीं इसमें, सिंपल है, जस्ट No, simple. कैटेगरी, इट्स वेरी इजी, इज नॉट टफेस्ट वन। Yes, sir. नेक्स्ट, टर्न टू दी परफेक्ट। लेट्स चेंज दिस वन टू इस सब में एप्लीकेबल है, कोई एक में इस सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं टूल टिप की बात करते हैं। टूल टिप ऑलरेडी अप्लाइड है, सो प्रीवियसली इफ यू वॉच प्रीवियस वीडियो, ओके, सो there is a different way to do that, but right now the situation has been changed and option has been changed too. So you must go to the view and select all option here that you needed. So इसके लिए चार्ट्स पे आते हैं। मुझे जब भी मैं गवर्नमेंट से लगूँ तो मुझे टोटल सेल्स दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे टूल टिप ऐसे दिखे, मुझे सारी कैटेगरी मल्टीपल कैटेगरी मुझे देखनी है कि इस गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, उसको क्या क्या अमाउंट है, आई वांट टू सी दैट। सो हम इसके लिए सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक टूल टिप टेबल। मैंने जल्दी बताया था तो आई डिड नॉट कवर ऑल एक्सपेक्ट, ओके। So page information, tooltip, whatever name you wanted to see, doesn't mean give a tooltip, whatever you wanted to give, it's your name, it's your call. Right, okay. Next, if you wanted to add immediately tables name, columns name, you can do that here, no problem. But I'm not going to add you right now. Let's do the formatting and all. So sometime we need to change the visual as a dashboard, okay, so we can customize as well. See this, we can change the everything, okay. And then width can increase, decrease. I wanted to see in middle. Next, I wanted to add the visual as right click, add visual, and I wanted to add the here table, not a table. No, I wanted to add the matrix report. Where the matrix report here. Actually, I'm looking for the summary. Okay, so summary prospect. Country we have looking for the product, and against looking for the total sales. Total sales. See, then I'm able to see what all value we have sold till date. And column level with deviation looking for discount band. Okay, see it is. I think we need to increase the size, so view properly. So in that scenario, go to the property, and here I have width. Perfect. Still not 400. I don't want to see, we can say this way. Let's change it to the because see there is a problem in that it's taking too much space, and so let's try to increase the so let's go. In this time we can do full page as well if you need it.
want one to two a few more category, you can do that as well, doesn't matter. Okay, so what I'm going to do first, I'm going to remove some additional things that we don't need, that like non-discount people I don't want to see here, so remove none. Okay, so I'm looking for only those category which have a critical and like high and medium. Low and none can be removed because we lower discount has been given. So let's decrease the font width and this one. Perfect. Yeah, size थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें, कैमरा सेटिंग, हाइट कैन एडजस्टेड 400 पिक्सल, मैनुअली टाइप करने के बाद परफेक्ट, थोड़ा सा और स्पेस दे दें इसको, परफेक्ट. So I think there is no we can say hide anything. So high and low and product basic discount I wanted to check कि कितना discount दिया, to check whenever I want. So I want to pass this we can say value in chart. Here I wanted to see that. So what should I do? Just click this visual, go to the format, go to the property, and then collapse tooltip, increase this one. Sorry, tooltip. Usually it's a turn off, okay, but we need to turn on. Then go to the report page. By default display default report, but to change the report page, select the name that you have tooltip. Okay, and now see this. The report will display here. Okay, so you test it out. Sometime you got a problem. The problem is that is not going to see the data that here available. Okay, so you convert into the major. Okay, so major prospect, let's add the new table. And then press OK. Okay. Next, total sales. Okay, sum total sales. Okay, perfect. So next we just increase the font a little bit. So this total sales, perfect. See, now the problem is that here if you pass the total sales, okay, since we have a problem in the filtering part, okay, so we must ignore the all filters. In that scenario we use the keep filter functions. Okay, so keep filter, but if it doesn't apply directly in this, so use calculate, keep filter, value, and whatever criteria, like I'm looking for the here segment. It and this is going to be date because I'm looking constant for then sum total sales.
not needed. Okay, let's see. If not working, then we'll remove it. Okay. True, false. Then segment. Then value segment. Filter. Then we have the segment not equal to blank. Perfect. सो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम फिल्टर करेंगे, ठीक है, सो वो हमारा जो फिल्टर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मूव नहीं करेगा वहां से, ठीक है। सो इससे हमारी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो हम इस चीज को पास कर देंगे लाके टूल टिप में, जो हमने टोटल लिया है टोटल केस में पास कर देंगे। सो हाउ टू डू दैट, क्लिक हियर, रिमूव द टोटल सेल्स, पास टोटल सेल्स, ठीक है। तो वैल्यू भी सेम रहेगी और हमारी प्रॉब्लम नहीं। इसमें 99 केस में यही प्रॉब्लम आती है। सो यू मस्ट क्रिएट द मेजर एंड यूज द की फिल्टर सो दैट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी डिस्प्ले, ओके। सो यूज दिस वन, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई एम शोइंग टू यू, ओके। नेक्स्ट वी हैव द ड्रिल अप, ड्रिल डाउन कवर, देन वी गो टू ड्रिल थ्रू, ड्रिल थ्रू। Drill through, like see, have a chart, okay, and I want you to see the list of the data that we have, okay. So see, already have a table here, okay, so I'm going to configure this one. So how do you configure this? So select this table, okay, then go to the format, then there is an option which is called tooltip and drill through, two options there. No, I think click here, page, see page and drill through, okay. So drill through, see previously I have a different option, but now a different option, okay. I'm second time creating drill through here because previously I have a different way to do that. It directly in here, okay, we had an option here to you can see visualization pane that just pass it and automatically it will display, but now they have changed everything. Just go to the direct page level formatting and then you can see this option, okay. Thereafter going to pass all columns that you want, that you available in the table. So I want you to pass each column, cells, pass one by one. Then we have cognos cells, then we have country, then we have, sorry for the noise because it's uncontrollable things, discount band, oh sorry, discount band. This is very useful whenever you need, then we can say you got a problem, so please make sure that if you have doubt, let me know. Product, I know this is not a very toughest one, okay, because you can do that. Even Python is also easy. Don't scare that Python is tough. No, there is no coding. I started personally, I'm saying when I started that, I was scared too. But right now it's not tough. Only one thing is required, your willingness to learn that you have already. Because the situation that you have, I understand that how critical situation you have, but still learning. Even some situation not possible to me to learn, but yeah, to learning it means you're giving the best effort and the work and anything. So this is that drill through, okay. I created that. See, once I enable that, automatically button appears. See this, here, see this. I wanted to change this one to we can say formatting. So click here and then go to the format.
Perfect. So if you're looking for the increase the height width, so you can do that as well. Then width can reduce little bit. Perfect. Then I'm looking for the background color white, so that it will highlight that. Else, yeah, that's good. And visual border should be changed any color that you're looking for. Next we have shadow. Give the shadow, no problem. Inside. See why given this option. What we will do when we publish in the services, we hide this one. Okay, it doesn't display to the customer that time. So whenever customer go to this page, they will automatically see this option and they click and get out of it. So go to the chart and see, right click, drill through table. Okay, and say this. Automatically it will filter the required information. Then I want to go back, click here and go back. Let's change the segment based. Then we have again test it out. See, only one segment we have. We are looking for the government part only, so see, only government we have. It will automatically filter it. So see, who's looking for the total, and as well as they are looking for the we can say row level 2. So those people can use this. And still, if you wanted to download these things, so you can download it here too. Export as a CSV here. If anyone asks you that is it possible to download in Excel, you said yes, but it's the CSV format only, and I'm not able to give you using Power BI desktop in your manner. So to this, we must you must create the Power BI report builder. So I'll show you right now, don't worry, and I'll just show you everything. Say this, I exported in CSV format. So CSV is a command-based prompts that going to create the different logic. Next, also if you wanted to add the button, you can do that. Drill button too, you can do that. Pass this one drill button. Let's create the using bookmark. Create the button, toggle button. Toggle button prospect, we need to go to the bookmark first. There is a bookmark pane. If you don't see here, go to the view and select bookmark. Okay. So to this, click here 1 and 2. So before I am going to create the bookmark, I wanted to create the two table here, two chart. So this one, and add here chart 1. Select this one and next. Text, and then select the discount. Okay, 3 categories we have. Next, copy and paste, and I wanted to check this one. Perfect. This time, instead of selecting this, I wanted to select segment. Whatever value you can select, doesn't mean I'm giving it you can say idea. So see, customer have a requirement that whenever I select something, okay, it will automatically display that value I'm looking for. So first visual I wanted to see one time, and second visual I wanted to see second time. So first go to the format it. Background color, title majorly wanted to change that. Title, okay. So total by discount and okay, and I wanted to see bold. Text color should be white. Background color should be this. Okay. Even you can change the size as well if you need. Yes, perfect. Now just select here. I don't have much time, just paste here. Okay,
So we have a two different visual is ready now. My problem is that whenever I select on, so let's change on and off. Why I'm giving different name? Because to make you understand, that's it. So please, we can say you can give any name that you want. Okay, so go to the bookmark. If in case not able to see bookmark, go here, select bookmark, and then here option. Okay, next add the selection. If you don't have selection, go view and selection, add selection here too. So first we are going to create the insert here. Once you added the bookmark, go to the button navigator, bookmark navigator. Once again I am going to tell you insert bookmark navigator, bookmark navigator. Okay, any Okay. doubt, any confusion that you have, let me know. Okay, I'll repeat once again if you have a doubt. Should I repeat these steps or No, 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 no. okay? No, it's fine. Perfect. So this is that I have two button, but my problem is that I'm looking for one button at a time. I don't want to see on and off together. So let's do it. So first let's group it. See, if I click here, group is hide now. So how to deal with it? Click outside, click here, and then go to the group and enable this to group it. And type toggle button. Doesn't mean toggle, you type whatever you want. Doesn't mean toggle button. Label is not a problem. Label you can add whatever you want. Okay. And then go to the format. And we have mark. One second, guys. Sorry guys. So see, here have a bookmark. Okay, then go to the toggle button that I group I given to name. See, here have a toggle button. I'm going slow. If in case any confusion, let me know. Then allow deselection. So all on and then pass off here. See, already pass the toggle button in on option. Here pass the off button and see now turn to the one on option is coming now. Any doubt till the time? Okay. See, few we can say few kind of options we have. Few options we have which is called Unicode character. Okay, so circle whatever you want select. Unicode is kind of we can say characteristics that use in the Power BI. So ये आप easily get कर सकते हैं. ये link ले लो या गूगल पे भी टाइप करके यूनिकोड कहीं से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन पास यूनिकोड whenever you want. The folder of yours. You do not have a notepad? What are you talking about? So you can pick up any Unicode that you have. And next, come to the here. Copy this one. Okay, copy this one and again go to the bookmark, toggle button and click twice, maybe right click here and rename. Okay, whatever is and then paste it. See, button change to the automatically will change to the off to button. Okay, next, this is I'm looking, I wanted to convert this into button, so we need to adjust the size of it. Okay, so go to the format, start from here. So I'm looking for height 80, not more than that. Width should be 150 is maximum, that's sufficient. Maybe if you want it increase more, go ahead and do it. So let's do it 200. Okay, next, inner padding, if you wanted to go left and right, then you can do that as well. Background color
So we'll select no problem. So by default I wanted to see the white color. No white. If I select white, select yellow color. Okay. So visual border, also you can change the visual border. If you're looking for change, go ahead and do it. So yeah, perfect. Shadow is not needed. Okay, title not needed. Shape, come to the shape. I'm looking for shape in the rectangle, round rectangle or peel, whatever select, go ahead and do it. So as per units, I think this one looks good. So next we have style. In by default, right now let's choose the selection. If I select this one, okay, so it go to the left side alignment and increase the font up to certain limit where it looks good. Okay, see it's coming below. I wanted to shift up, so go to the here padding. So padding prospect. Oh, sorry. No, here no. It's a left and right. So this is the left. But it should be coming the this one padding. Okay, bit looser space it has. Okay, so see it looks good. Now go to the once again on selection, then fill color should be instead of this, wanted to look this color. Okay, if you're looking for the border, do it, add that. Shadow, do it, add whatever is looking for test and glow. Yeah, you can do that. Layout, everything you can change whatever you want. Okay, then button has been created. Next on selection, this option looking for good, then select once again in middle. Okay, but if I don't select anything, then what happen? In default I'm looking for the left side. Okay, size to be changed, whatever size looking for. Font color should be white, doesn't display, doesn't matter. Okay, now if I select this time, fill color should be instead of white, I'm looking for the yellow, or maybe select different color. Let me choose different color. Perfect. And then when select this one, but yeah, at desktop using control you can change this option. Any doubt? Button has been created now. I want you to apply this. Okay, so how to apply this one? So let's check it right now. So go to the selection. Okay, selection is allow me to we can say hide and display anything by even selecting the group as well, and hide and both options you can see. So let's select total sales by segment. When I select the on means here, then segment can be display and discount band can be display and segment is turned off. Okay, so first step, go to the bookmark and apply update. That's it. Next we have whenever I select, okay, whenever I we can say select off button, then segment and this one. Okay, so go to the pass in the bookmark off. So let's check it out. Okay, so if I push on, then off, then off, then on, and let's pick up here and keep it together. If I adjust the proper manner, it will look like the same. But yeah, customer can see same thing twice and thrice. But yeah, you can group many visuals together, not just one. Okay,
and do it. So like suppose I have a 4 and 5 visuals, so group it. So how would I group it? So let me show you. To add two visuals together, add visual. Any doubt in button? So should I repeat or is this okay for you? No, sir. Okay. Got it. Test it, you let me know if in doubt. So see it. And next I want to create another visual. So how should group it? Select this one and this one. Right click and group it. Group. And group, ungroup and merge. Everything is possible. If you don't know this option, go to the selection, select two things together, right click and group it. Okay. Control and select right click, group it here too. And it will move together. So if you group it and use the bookmark, so definitely it's going to hide it. So if I hide group, see this, hide, open, hide, open. So bookmark is going to help you in this, okay? So remember when you need this, so I know you remember it, don't worry. Okay. Tooltip, drill through, drill down, then we have incremental refresh part, okay? So incremental refresh part, we have to go here, transform, whatever data you have. See, I have a free license, so it has a few limitations. Just I'll show the image as well. Okay, so we must create the parameter. Okay, so parameter we have to change the two parameter. First one, give the start date. Doesn't mean start date. Whatever you pass, go ahead. It's your call, and change to the date and time. And say require if you don't want to it, also no problem. Check it, no problem. 20, 20, 30. Then 0101, okay, start date, time will pick automatically, type in date, any change the data type, this one paste that, okay. Yeah, you can, if it doesn't paste here also it will pick up from the system. So this goes, okay, this date is going to replace by a system in automatically Power BI when it was working. So this date is automatically changed by the Power BI, don't worry about that, okay. Close it. Two parameters created now. Go to the data set, whatever data set you have, and then select date column. See, go to the here, okay, and date filter. Between, obviously I wanted to select between the range, and this is part for incremental refresh only, not live refresh, okay. See, Okay. here's a problem. Whenever I select parameter, I'm not able to see the both two option. Why? Reason is that I selected the date and time in parameter, say this. Date and time, okay? And here have the date. Okay, date. So how to deal with it? Just click here and change the date and time. It means if you wanted to change the whatever format you created, your parameter must be the same what we apply here too. So this one, date and time filter, between, and now start date parameter, start date, and now in date, and press OK. So it will going to control your data, okay. See, it doesn't have anything, doesn't matter, just I'm giving idea, okay. Then close and apply. Once come here, so select your data set. Obviously we are going to select, we have a huge data, then we're going to select that. So here select your model, right click, go to the incremental refresh, and see, I have a free, otherwise I have to buy it, but I haven't buy it. You see, it has a limitation for me only, not for you. So once you select that, okay, so it will look like this.
1 second. Image. So it's coming look like this. Select the table name, engagement is on. Then here you can pass the year, month, days, whatever you have, you can pass it. And like suppose I'm looking for order date past 5 months, 5 years. Okay, select the year with the past 5 months and pass the 5 months. Refresh rows where column order retail in last date, so 10 and days. Okay, 10. So this way we have the 10 days here. So after and see, every data set have a last modified date column in the database. Okay, so we need to pick up this column here and pass in the deduct data type change. So behalf of this, it will going to deduct your each column. See how does it work. See, suppose here I created the 1, 2, 3 and date. So if any last modification has been done, then last modified date is going to modify every time. So going to system, check that is this matching my last date or not. So in date is going to match from the this date. If it's not matching, it's going to replace the all rows that we have. So this is concept that working by the Power BI. So what you need to do, you need to link with the in date. Without date, incremental refresh is not possible. If interviewer asks you, in my incremental refresh we don't have a date, how do you deal with it? So you must say we need to create the date so that we can apply the incremental refresh. Without this, not possible. But we need to find any solution for it. And what solution would be right now, that I don't know. But yeah, once I get the data, I'll do that. See, Okay. the logic in Power BI that if data is already coming, okay, and if it changes that, then change the data. Otherwise, don't modify, then pass the value. So many options was there. You can if and or and use logic and build that. Like suppose build the logic if column has all data is matching, okay, then do not change the date. If not matching, then change the date. It will possible. But how to apply this, it depends on the data and situation. We cannot do anything. Okay, so this is the best part. Next we have data flow. So let's publish this thing in Power BI and test it right now. Okay. Okay, I applied the. Let's refresh it. Let's change the date so that data can be displayed. In date will be changed to 15. Pick up the system. Let's refresh it. Okay, now data is coming. Let's go in the services to test everything. Training. We have to clean my Power BI because too many important tests. Okay. Now here we have laptoppowerbi.com and you can see that here you don't in Power BI services you don't have to use any we can say any control button. Control button is not needed here. So see this. Then we have the charts. So right click. See bookmark will display like this, and the option that I told you, see this display all option here. Okay. Then we have the if I'm looking for we can say drill through. So right click and drill through option here, table. Go to the table, see data, then go back. You don't have to click on the press the control to go back. Only desktop is required. See, some situation customers say do not show the filter pane. So what you need to do here, just come here
and click on hide and then publish. It won't be displayed. Just replace it. See, until do not replace until unless we can see you can any region. You always create the copy of Power BI desktop and then you can publish it. Like suppose you are working on the current report, so make sure download those report, create a copy, then work on the current model. What happened that any instance report can be deleted, anything happen. So at least we have a copy to handle that. So please never do that. Many people make mistakes and that's going to create the problem for them. See this, filter pane is disappear now. Okay, tooltip. So this is the tooltip that I have seen the chart. Now I publish it. I want you to use this data set in my Power BI. How do I deal with it? So go to the here and we have option which is called Power BI data set. And the data that I publish, I can use it here if I want. So there's nothing else I have to do now. So the Power BI data I publish, I can use it. See, finance index. Since I have finance, I'm just using index here. Potential risk, no problem. I'm not going to share data with anyone. It's internal job. Okay, see, it's appear now. Same Power BI that I publish, I'm using here too again and again. Okay, but I'm going to delete that because I added. So it means whatever you data created in the Power BI, you can use it here too. So KPI tooltip, and next we move to the table chart assignment tooltip. Okay, few important things that are going to cover in the Power BI app. See, sometime see, I wanted to use Power BI data as in SQL server. Okay, so I can do that as well. Click here. Okay, now see this is the report, and this report asset I'm going to use as the SQL server. So to this, come to the data hub. Click here. Here I have an option which is called. See, all option is coming now. Okay. So create report, create model, open data model, show tables. See, show table, create data set, share data. Yeah. Create report, start from this case, connect to report. Okay. So auto create. Using data set, I can create the report if I want. Show as a table, financial index. So financial table I want to show it. See, we created the same dashboard that we okay. The dashboard that I created, Power BI created this way. सर इसको दोबारा से एक बार बताना सर ये कैसे किया आपने? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं Q&A. ओके, डेटा सेट है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लो. तो यहाँ पे अगर डेटा हब में आओगे आप, यहाँ लिस्ट ऑटोमेटिक दिखेगी आपको. डोंट वरी, चाहे कोई सेलेक्ट भी कर सकते हो जो भी आपका है. सो माई डेटा ऑल ले लिया मैंने इसको. देन मेरे पास जो रिपोर्ट है, मुझे एक नई रिपोर्ट बनानी थी. क्रिएट रिपोर्ट, ऑटो क्रिएट. अब ये मॉडल को आपको एनालिसिस कर रहा है. प्री सेलेक्टेड डेटा. Every time it's going to create different report. You can take a help from here, okay, and build the report if you want. Downloading, I think not possible right now, but let me check it right now. Test Q&A.
content report to this Q&A test. Yes, Q&A test. Will it allow me to delete and download? Is the biggest question that I have. While yes is downloading, it will allow you to download as well. Okay. Yeah, so previously it was not possible, but yeah, it is good. At least they make a changes. See, in 3 months, they have do a lot of changes in Power BI. So see, I told you, that in a few years, you're not able to, you don't have to work on the Power BI, you can say desktop, just publish the data, it will automatically create the dashboard, just do modification, nothing else. Even do modification too, say this here. लेकिन हाँ इसके लिए हमें पहले डेटा सेट जो भी होगा वो हमें लोड करना पड़ेगा ना? हाँ, मैंडेटरी है, लोड करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सो ये ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन है, ऐसे पहले डेस्कटॉप पे दिखता था, बट हाँ ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिया, तो देन यू नीड टू, हाँ सी वही ऑप्शन है सर, चेंज इट एज वेल। ठीक अब आते हैं डेटा मॉडल पे, ओपन डेटा मॉडल, तो यहाँ से डेटा मॉडल भी चेंज कर सकते हो, व्यू बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से व्यू, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बुक मार्क पेन, सिंसलाइस, इनसाइट पेन, सारा कुछ है। इसको इनसाइट बोलते हैं, डेटा इनसाइट। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, ये मुझे लगता है बेटर है। हाँ, इसके लिए है कि धीरे धीरे आप चीज़ों पे काम करो, धीरे धीरे आता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ये हेल्प आपको तब करेगा जब आप कहीं स्टक होते हो, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन दिस सिचुएशन। ओके, ओके। थ्योरी पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको वो चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, बाकी देखो काम करना, जब आपको चीज़ बेसिक पता हो, धीरे धीरे काम कर लोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इनिशियल फेज में, 30 डेज 20 डेज प्रॉब्लम होगी, फिर कंटिन्यू डू थिंग सेम थिंग, सो यू कैन हैंडल इजीली। ठीक, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए क्या बचता है इसमें, ये भी डन है। कैलकुलेट फिर जान ही गए हो। प्रो प्रीमियम लाइसेंसिंग टर्म में कोई डाउट? शुड आई रिपीट वंस अगेन एंड सिंग में तो पता ही है ठीक है, यू नो हाउ टू पब्लिश द रिपोर्ट इन पावर BI सर्विसेज, सर। selection pen and bookmark, any doubt, KPI tool tip and all, ये आप No, sir. हाँ, अगला जो सेशन लेंगे आपका, हम आर पाइथन पे लेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे। ड्रिल थ्रू ड्रिल डाउन आपको पढ़ा दिया है, असाइनमेंट और 2 चीज़ें बचती थी, आपको बताएंगे कैसे। लेकिन हाँ, एक काम करना अपने सिस्टम पे कि आप जाओगे, देखो यहाँ पे पावर BI ओपन करोगे, फ्रेश पावर BI ओपन करना है। मैं हार्डली कर लूँगा 15 मिनट, और उसके बाद से उसके बाद मूव कर लेंगे प्रोजेक्ट्स पे। यहाँ पे आओगे फाइल में, ऑप्शंस के बाद आते हैं आर। ठीक है, अगर आपको और इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ देखिए, नहीं हुआ तो यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल और क्लिक करो, और यहाँ से आके आप डाउनलोड करके क्रेन रिपोजिटरी क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे। आई एम सेविंग यू लिंक इन योर नोटपैड। इंस्टॉल जरूर कर लेना, इंस्टॉलेशन विल टेक टू मच टाइम। ये हो गया आर के लिए। आर लैंग्वेज के लिए हो गया। देन इसी का जो आईडी है जिस पे हम लिखते हैं कोड, उसे बोलते हैं, ये समझ रहे, समझो, उसको बोलते हैं आर स्टूडियो। ये टाइप कर लेना, मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, फ्री वाला वर्जन। ठीक है, हाँ आईडी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हुआ पाइथन। पाइथन टाइप करो गूगल पे, ChatGPT पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन इंस्टॉलेशन, सो क्लिक हियर, डाउनलोड पाइथन। यहाँ से जो भी लेटेस्ट हो डाउनलोड कर लो। अगर चाहते हो कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप थोड़ा सा नीचे के एक लोअर वर्जन डाउनलोड करो 10 का। ठीक है, क्योंकि अपडेट होता रहता है, तो ये डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।
डाउनलोड करने के बाद इसका जो आईडी लोगे पाई चार्म, ये अभी के लिए नहीं है, ये मैंने दे दिया है, आगे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टॉल आईडी, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पाई चार्म। ये कहाँ से मिलेगा आपको? इसके लिए जाओगे एनाकोंडा की वेबसाइट पे, गूगल डाउनलोड, इनका प्रोडक्ट है, ये देखो यहाँ से कम्युनिटी डाउनलोड करना, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके लिए लाइसेंस मांगता है, दैट वी डोंट हैव। ओके, सो कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करो एंड देन जैसे ही सारे इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिक, और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई जल्दी नहीं गिनो, ठीक है। देन नेक्स्ट जैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको सर मैंने तो गूगल कोलैब देखा था। कोई बात नहीं, बहुत सारे जो यूज करना करो, इट्स योर कॉल, आई डोंट केयर। बट मैंने जो बताया क्योंकि इजी है, वो डेस्कटॉप पे होता है। देखो हमारी एक बैड हैबिट है, ऑनलाइन पोर्टल पे ना थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उतना हम नेविगेशन नहीं आता। अगर आप यूज करें तो कोलैब भी सही है, बहुत सारे आइडिया बता रहा हूँ आपको, एनाकोंडा है, पाईचार्म है, जुपिटर। स्टूडियो है, जुपिटर नोट है, वही एनाकोंडा में वही आता है, जुपिटर नोट है, बहुत सारे हैं, 100+ एप्लीकेशन है जो कि ये सपोर्ट सर्विस देते हैं। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको कितना आता है, उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे इंस्टॉल कर लोगे यहाँ पे लिंक दिखने लगेगा और आईडी दिखने लगेगा आपको, आईडी कौन सा है, यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो इंस्टॉल कर रखा है, दिख रहा है आपको, os.phy फाइल है, ये मेरा पाइथन इंस्टॉल है इसमें। सो ये दिखेगा आपको, ये रहेगा। तो आपको हम यहाँ पे जैसे देखो, ये यहाँ पे विजुअल है, राइट क्लिक करो विजुअल, और यहाँ पे देखो पाइथन आर का और PYNR का विजुअल है, आर दिख रहा है, हाँ ये रहा पाई, ये सर हाँ, ये दोनों का विजुअल है। यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। सिंस ये डेटा साइंस वाला काम तो है नहीं हमारा अभी राइट नाउ, तो ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर कभी आ गया तो आप क्या करोगे, इसीलिए दैट्स इट। इवन अगर इफ यू वांटेड टू राइट डाउन क्रिएट यूजिंग पाइथन क्रिएटिंग अ मॉडल, तो भी पॉसिबल है। ये इंसर्ट आर एंड पाइथन, आप उसको उस कोड को ही पोस्ट कर सकते हो। इसके जैसे अपने स्कूल में कोई क्वेरी है आपकी, पाइथन में रन कर लिया आपने, उठा के डेटा मॉडल बना के और पास कर सकते हो यस पावर में, और इसको उठा के सी इन फ्यूचर ये ऑप्शन यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको अगर नहीं बताएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बताने, ठीक है। ओके। अब आपके पास बचता है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और ये दो ऑप्शन, ठीक है। सो सी यू टुमारो, मुझे 3 days दे दो, विल ट्राई टू कंप्लीट योर कोर्स, ओके। ओके सर। हाँ, बाकी इंटरव्यू के लिए क्या प्लानिंग किया आपने? सर इंटरव्यू की प्लानिंग के लिए थियोरेटिकल उसको पढ़ रहा हूँ, बीच में तो पढ़ नहीं पाया था, अब पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा फिर तो से। इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो अभी? नहीं सर, इंटरव्यू तो दूंगा। अभी दिया नहीं है? नहीं सर, उसका सेकंड राउंड का हुआ था, उन्होंने मुझे बोला था, मैं तो उस समय वो था मेडिकल उसमें था, तो मैंने बोला था कि मेडिकल इश्यूज में, तो उन्होंने मुझे बोला था ठीक है आप हमें अपना अवेलेबिलिटी टाइम बता देना, हाँ, तो उसके बाद बात हो नहीं पाई थी मेरी उनसे। तो कोई नहीं, बता देना अवेलेबिलिटी टाइम, बोल रहे हैं कि तबीयत खराब थी, क्या कर सकते हैं, देख लो वहाँ, कोई बात नहीं, बहुत सारी कंपनियां, देखो जॉब की कमी नहीं, हम उस लायक नहीं कि अगर मैं चाहूँ, अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, मुझे पाइथन उतना अच्छे नहीं आता, क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? नहीं बन सकता मैं। जो मेरी कमी उस पर मैं काम कर लूँ, काम खत्म। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उसको काम करके उसको सॉल्व करके वहाँ पहुँच जाएंगे, दैट्स इट। मैं यही जानता हूँ। अगर कोई बोलता है कि नहीं तुम्हें पहुँचा देगा, तुम अगर वहाँ पे जाके और उस लायक नहीं रहोगे, तुम्हें अगर हम पावर बी की इंटरव्यू मैं दे दूँ, हो जाएगा, मुझे पता हो जाएगा, फिर जाके क्या करोगे वहाँ पे? वापस निकालेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं, तो यू टेक अ टाइम, योर टाइम लो और वर्क करो उस पर। हाँ, देखो बातें मेरी अच्छी नहीं लगती, बट हाँ, इन लॉन्गर प्रोस्पेक्ट यू हैव टू डील विद इट।